Today in this video we will talk about non-finite verbs, or you can also say infinitives, gerunds and participles. I have found out that this topic is very troublesome for most of the students, and most of the students have asked me to form a video on this topic कि non-finite verbs क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या इनका कुछ ऐसा खास स्ट्रक्चर है जिससे हमें पहचान हो जाए कि ये इन्फिनेटिव है, ये जेरेंड है और ये पार्टिसिपल है, और इनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में। तो मैंने इन तमाम कंफ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सब के लिए ये वीडियो बनाई है। Okay, without wasting any time, let us move toward, first of all, towards the definition of non-finite verbs. Non-finite verbs are used in comparison to finite verbs. So there must be some difference. Non-finite verbs perform action like finite verbs, but they have no subject word. हमेशा याद रखिएगा कि जो भी finite verb होगा उसका कोई ना कोई subject word होगा। उसके अलावा नॉन फिनाइट वर्ब्स आपके कभी भी लिमिटेड नहीं होते, किससे? टेंस, टाइम, सब्जेक्ट, जेंडर या नंबर से। लेकिन जो फिनाइट वर्ब्स होंगे वो हमेशा लिमिटेड होंगे इन तमाम चीजों की वजह से। एज टेंस चेंजेस वी आर गोइंग टू चेंज द फिनाइट वर्ब, as the subject gender changes we are going to change the finite verb, but there is not any limitation, or these things, tense, time, subject, gender or number, never limit the non finite verbs. अब यहाँ पे अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें जिनमें नॉन फिनाइट वर्ब्स को अटैलिक्स में प्रिंटेड किया गया है और फिनाइट वर्ब्स को कैपिटल में, तो इससे आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। होपिंग फॉर गुड न्यूज वी टेलीफोन द हॉस्पिटल। अब ये जो है टेलीफोन्ड, ये आपके पास इंडेफिनिट टेंस में है। if it is in present indefinite tense you would have used we telephone. So we saw that finite verbs are those verbs that are limited by some of these aspects, but non-finite verbs are never limited by these aspects. The present participle will ever remain the same. It will remain the same like hoping. ये इसी का इसी तरह रहेगा and it will not change. For example, if we have changed any tense or if we have changed the subject. She expects to pass her exam with good grades. She expects. Expects over here is a finite verb, present indefinite tense, and we have used sa sound, one more a letter sa, because of she, because it is a singular pronoun. To pass is infinitive, it will remain the same whether we change any tense, whether we change the subject or not. Sewing is an extremely important skill. Over here sewing is gerund and it is used as a subject, and is a finite verb. तो अब जरा हम इन तमाम जो हमारे पास तीन नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं उन्हें डिटेल में देखते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, वी विल टॉक अबाउट व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म इन एनी सेंटेंस, कि वो क्या फंक्शन भी किसी सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपल इन्फिनेटिव, then we have bare infinitive, and then we have split infinitive. First of all, let us talk about simple infinitive. Simple infinitive begins with the preposition to, and here are certain examples: to play, to hide, and so on. In a sentence it can act as a verb noun, verb adverb and verb adjective. तो infinitive, simple infinitive से हमें ये समझ आया कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा हमेशा to से begin करेगा, and after to we always have first form of verb. Over here if we just see certain examples: to walk is healthy, we try to open the window, the tourists come to enjoy our scenery, is there anything to eat on plane. अब इन सब examples में you might have noticed there is certain structure, and that is we have used to, and after to we have used first form of verb. लेकिन बच्चों structurally they have different function. Functionally they have different function in a sentence. जैसे अगर हम बात करें to walk is healthy, over here it is used as a noun. We try to open the window, over here again it is used as a noun. The tourists come to enjoy our scenery, over here it is used as an adverb.
Now you would be confused how it is an adverb. First of all, I'm going to form a different video on parts of speech from where you will get to know कि adverb की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, noun की हम कैसे पहचान कर सकते हैं. बट अगर इसमें देखा जाए, the tourists come to enjoy. Why do the tourists come? So it is answering adverb of reason. Is there anything to eat on plane? And it is used as an adjective. तो अब इसके अलावा हम अगली टाइप्स पे चलते हैं इन्फिनेटिव्स की. एज वी सेड दैट देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव. फर्स्ट वाज सिंपल इन्फिनेटिव, जिसका जो स्ट्रक्चर था इन दैट हमने वो देखा कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करता है. और स्प्लिट इन्फिनेटिव, अब उसकी ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें देखते हैं. स्टूडेंट्स, इन स्प्लिट इन्फिनेटिव वी यूज टू प्लस एडवर्ब एंड देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. It is really important. अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही समझ आ जाए, then I think you would be able to save your marks. And in bare infinitive we just use first form of verb and it is mostly used after modal verbs. तो देखा जाए, दोबारा हम देखें, simple infinitive 2 plus first form of verb, split infinitive 2 plus adverb and first form of verb, and in bare infinitive we just use first form of verb and it is mostly used after modal verbs. Now let us see certain examples. We need to softly treat our children. Split infinitive. Why? Because over here if we see 2 plus adverb plus first form of verb, there is no need to blindly trust your child. 2 plus adverb plus first form of verb. अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने स्ट्रक्चर एज इट इज आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है. Krishna can swim well. Bare infinitive. Modal verb, first form of verb. First form of verb and mostly after modal verbs. Nazik must do this. तो यहाँ पे अगर देखें, again there is a modal verb and then we have used first form of verb. I think so now infinitive would be clear to you. Now moving on to gerund. The gerund is a non-finite verb ending in ing. It is always used as a noun. अब ये जो word है, हमें ये क्यों याद रखना जरूरी है? Why? Because in present participle again we have non-finite verb that ends in ing, लेकिन वो यूज होगा एडजेक्टिव के तौर पे. लेकिन ये याद रखना है कि जेरंड जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी सेंटेंस में नाउन का. स्ट्रक्चरली वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing होगा, लेकिन फंक्शनली वो एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगा सेंटेंस में. अब यहाँ पे देखें, रोलिंग द लॉन इज हार्ड टास्क. अब रोलिंग द लॉन आपके पास यहाँ पे एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो इट इज अ जेरंड. दे हैव बिगन रिपेयरिंग द कार, अगेन इट इज अ जेरंड. अ गार्डनर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट टास्क इज वीडिंग. द स्टार अपसेट हर मैनेजर बाय कैंसिलिंग हर कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगी कि ये जो नाउन्स हैं इनकी अपनी सर्टन प्लेस होती है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कभी भी पार्टिसिपल कैन नेवर एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये जेरंड है, ये नाउन है जो एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दे हैव बिगन व्हाट? दे हैव बिगन रिपेयरिंग द कार. अगेन इट इज अ ऑब्जेक्ट, it is an object, and over here it is again an object, and lastly it is object of preposition. तो याद रखिएगा हमेशा object of preposition एक noun ही होता है. Now let us move toward the last part of non-finite verb, that is participle. We divide participle into two different types, present participle and past participle. अगर हम इसे structurally देखें तो present participle आपका बिल्कुल gerund की तरह होता है. But functionally it is different. Structurally it has the same form like first form of verb plus ing, but functionally it is used as an adjective. Illness of Pooja gave us all a worrying time. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये present participle है. इसका कुछ clues भी हैं, जैसे अगर देखा जाए हमेशा adjective से पहले article use होता है. अब यहाँ पे देखें, if this is a noun and this is a head word, then it must be an adjective, और adjective से पहले हमेशा आप लोग article का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे अगर देखें, again there is an article, adjective, head word, that is a noun. आपको पता है कि किसी noun phrase में जो head word होता है वो noun होगा. Then we have before that there can be an adjective and there can be
an article as well. His report was very depressing. This again, this is an adjective and this is an adverb. Their asking way was not right. Again, this is the present participle. And in all these examples, these present participles are used as an adjective. If we move on toward the last category of participle, that is past participle, we find out that like the present participle, this form of verb is used an adjective. Functionally, it is used an adjective, but structurally, it is different from all the previous non-finite verbs because it does not end in ing. The past participle often ends in ed, en, d, or t. The tired road melted the sun. Tired road. Road, this is headword noun, this is article, and this is an adjective and used as a past participle. Rotten eggs smell bad in summer. A bound volume of essays was given to him. From now these, I think so it would be clear to you what is an infinitive, what is present participle, what is gerund, and what is past participle. If you have any question, you can type in the comment box. I'm going to answer your question, but for that you need to like and subscribe my channel. Thank you so much.